ब्लॉक 2 का यूनिट 2 जिसमें है पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड सारा टॉपिक। ओके, सो ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसका हम एक कंसाइज वे में डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, वहीं से हम पढ़ेंगे, पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द बिगिनर्स, जो लोग इज नेवर लर्न एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोड बिफोर, सो उनके लिए ये टर्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जस्ट लाइक मी। सो यहाँ पे मैं इससे कंटिन्यू करती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, it allows one interface to represent multiple form of behavior depending on the situation. So okay, it allows one interface to represent multiple form of behavior depending on the situation. Example, real life. A man can be a dad, employee, salesperson, one person with many role. Polymorphism, बहुत सारे forms हो सकते हैं. It allows one interface to represent many forms of behavior depending on the situation. Like for a man can be a dad, employee, salesperson, the grandfather. Okay, one person with many roles. Java example, an object can behave differently depending on the context, like saving two contact number with under the same name, like saving two contact number under the same name, one name representing many numbers. Okay, one name representing many number. इस एक नेहा नाम का अलग अलग person हो सकते हैं who has like different number, like one नेहा has this number, another नेहा has this number. Okay, so name में अलग अलग number हो सकते हैं, जिसका example दे रहे polymorphism की idea. One entity can take many forms. Okay, one entity can take many forms. Next concept, abstract classes are closely related to the polymorphism. Polymorphism का बात करें तो abstract classes are closely related to it. Make sure important है abstract class in the polymorphism topic. Polymorphism, one subject object many forms. Introduction to polymorphism. Definition: polymorphism allows one method or object to behave differently in different contexts, to reuse inherited method from parent class to perform different subtasks in child classes. Requirement: polymorphism occur when class are already inherited by inheritance. Key idea: an object is polymorphic if it can pass one or more IA test, means the child parent wala relation. Now the example scenario: account class, parent with a deposit and withdraw, saving and current. Child classes are inherited method directly, differently. Result: same methods are used in different ways. Reusability. Programming example. ओके, प्रोग्रामिंग एग्जांपल है यहाँ पे, इसको स्किप करते हैं. बोथ एनिमल एंड कैट हैव द सेम मेथड लाइक मेक साउंड, बट द साउंड कैन हैव डिफरेंट फॉर द एनिमल. फॉर द डॉग विल हैव अनदर साउंड एंड द कैट हैव अनदर साउंड. ओके, then polymorphism, same method behave differently based on the object type. Key idea: single action multiple achieved by method overriding inheritance. Advantages of polymorphism: code reusability, already tested classes method can be reused, new functionality can be added without changing existing code. So real life example: a printer can print document from multiple device. A printer can print document from multiple devices, laptop, phone, tablet, using the same interface. You don't need to add a new printer for each devices. The same method print works for all. Single variable multiple data type. A variable can have different types of data, int, float, and based on the context, make coding and searching easier. Real life example for that: a wallet can hold different currency, dollar, rupees, euros. You use only one wallet to store all, just like one variable storing multiple types. Reduct coupling, reduce dependency between method and classes, improve modularity and information hiding. Real life example: a remote control can operate different appliances like TV, AC, music system with knowing how can device works internally. Polymorphism, reuse, flexibility, modularity in both programming and real life. ठीक है, code reusability,
सिंगल वेरिएबल मल्टीपल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेजेस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, सिंगल वेरिएबल मल्टीपल डेटा टाइप, सिंगल वेरिएबल कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप, करेक्ट है। रीयूज कपलिंग बिटवीन मेथड एंड क्लास, इंप्रूव रियल लाइफ एग्जांपल, ये सारा है। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। यस, देयर इज वन मोर डायनामिक, वेयर इज द डायनामिक? या हियर इज द डायनामिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम में ऑल्सो कॉल्ड अ मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म occurs during compilation, achieved by method with same name but different parameter or signature. डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम में, कंपाइल टाइम में, रन टाइम में, ऑल्सो कॉल्ड मेथड ओवररीडिंग, occurs during run time, achieved when a child class provides the own version of method with the same name and the parameter as the parent class. Same method name different signature, a compile. Same method name different signatures. A dynamic same method name and signature different class is the runtime. Method overriding क्या है? Overloading और मेथड ओवरराइडिंग, इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग का बारे बोल रहे हैं। डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, मतलब डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम, ओवरलोडिंग। डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। Compile time is static. How it works? Java distinguishes with method to call based on some int, different type of parameters, some float and int. Sequence ये कुछ है. Same method name, different parameter. Same method name, different parameter. Same method name versus different parameter. Helps to code reusability and readability. Overloading का हो गया overriding. When a subclass method has the same name as parameter. जब child के method, when a subclass, जब child method has the same name and property as the method of superclass. Okay, subclass और superclass method has same name and parameter, same नाम और parameter का हुआ सब और super. Override super class method, calling the method on the subclass method always, calling a method on the subclass always uses the subclass version, hiding the superclass version. Types of polymorphism, runtime and dynamic. Rectangle and rectangular overrides figures area. Runtime polymorphism, the method executed depends on the object type at runtime. Key idea, method overriding the same method signature, different behavior in subclass, allows single interface. Abstract in Java, important again. A class that represent a generalized form and may, okay. A class that represent a generalized form and may contain abstract method. A class that represents generalized form and may contain stable method. Allows subclasses to provide specific implementation of abstract method. Allows subclass to provide implementation of the key point. Declared using abstract keyword. Can obtain both abstract and non-abstract method. Declare abstract, non-abstract method. Cannot be a class that represents the generalized form and may contain abstract method with a body purpose. Allows subclass to subclass मतलब child to provide specific implementation of that method. Declared using this abstract keyword. Can contain both abstract and non-abstract method. Cannot be initialized directly. Subclasses must implement all abstract method will be declared abstract themselves. Can have final method that cannot be overridden. Bank is abstract and cannot be installed. SBI and PNB override the abstract method get trail interest. Abstract class allows common interface.
एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये देख लेते हैं पर्पस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस अलाउस कॉमन बिहेवियर टू डिफाइन while letting subclass and implementing classes provide specific details. Interface collection of abstract methods only used to achieve multiple inheritance. Abstract class versus interface feature declaration. Abstract class interfaces method abstract but non abstract only abstract. मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड, इसमें सपोर्टेड होता है। एक्सटेंड इम्प्लीमेंटिंग कैन एक्सटेंड क्लास प्लस इम्प्लीमेंटिंग कैन होल्ड वन। मेंबर विजिबिलिटी पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एग्जाम्पल सिनेरियो, ठीक है। ये था पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड टॉपिक।